आज का जो हमारा इस सेशन का टॉपिक होगा वो रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वो हम आइडेंटिफाई द एवोगैड्रोस नंबर, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस आज के सेशन में। उसमें हमारा रहेगा टू आइडेंटिफाई एवोगैड्रोस नंबर और टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन n number of moles and capital M number of molecules or atoms and NE Avogadro's number। और साथ में हमारा जो रहेगा हम PV is equal to nRT और PV is equal to nRT, दोनों जो आइडियल गैस इक्वेशन है इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। बिफोर इससे पहले कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो जो की आइडियाज़ है इसमें, जो हमारे पास की पॉइंट्स होंगे या की आइडियाज़ होगा इसमें, वो है कि जो मेन मकसद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये रिलेट करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स microscopic properties like pressure and temperature with microscopic properties। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हमें कौन कौन सा आता है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हमें काइनेटिक इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, एंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, प्रेशर और टेम्परेचर, इनको मैप करना है किसके साथ? इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड के साथ। यानी कि एक किस्म की मैपिंग है कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करोगे व्हेन यू हैव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और वाइस वर्सा। बाय नोइंग pressure and temperature we can explain or we will be aware about the state of any system। तो ये हमारे की आइडियाज इसमें रहेंगे और ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोल, आइडेंटिफाई एवोगैड्रोस नंबर, और उसके बाद हमने कहा कि हम मोल के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर के साथ साथ ही हम मोल के बारे में भी स्टडी करेंगे, और चूंकि ये ज़्यादातर पर केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हमारे भी यहाँ कई जगहों पे इसका इस्तेमाल है। तो स्टार्ट में हम सिंपली व्हाट इज मोल, वन मोल कितना है, हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ वन मोल या हाउ मच इज वन मोल। तो सिंपल डेफिनेशन इसके लिए, वन मोल के लिए आप सिंपल डिस्कशन सिंपल याद रखें, इट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मास in grams। Molecular mass means mass of one molecule। Before going further, let me tell you कि हम मोल को in terms of number of molecules भी लिख सकते हैं, मोल को हम in terms of number of molecules भी लिख सकते हैं, और मोल को हम मास की सूरत में भी लिख सकते हैं।
तो मास की सूरत में मोल को कैसे हम लिखेंगे, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सूरत में मोल को हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास ये दो तरीके के फॉर्मूलाज हैं। कभी आपको मास आप सब्सटेंस दिया होगा, आपको बताना इसमें कितने मोल्स हैं। कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो आपको बताना है कितने मोल्स, नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स मिलके एक मोल बना देते हैं। क्योंकि जब भी हम, मैं यहाँ तो पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, इनको हम रिलेट करते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के साथ। यानी कि यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं हम इसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के साथ। तो जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल को स्टडी करेंगे, ना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल को भी जब भी हम स्टडी करते हैं साइज ऑफ दिस सैंपल या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो उसके लिए हमें मोल में ही जाना बेटर रहता है कि आप इन टर्म्स ऑफ मोल ही उसको कैलकुलेट करें और साइज ऑफ द सिस्टम को आप एस्टिमेट करें। तो बेटर है कि हम मोल की सूरत में उसे स्टडी करें। दैट इज व्हाई it plays a very important role to study about the mole. And I just use this definition that it is defined as the molecular mass in grams. Simple. आपको देखना होगा molecular mass कितना है। molecular mass को in grams में लिखना है। Suppose आपके पास H2 है, H2 का molecular mass कितना होगा, 2 into 1 plus 16 ऑक्सीजन का 18। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 इन ग्राम्स में आप सीधे लिखोगे दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O। सिंपल। आपको सीधे मॉलिक्यूलर मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लिखना है। तो ग्राम, सिंपली नेक्स्ट एग्जांपल आता है शो यू। से सपोज NaCl मेरे पास है, Na का 23 है प्लस Ca का 35 है अप्रॉक्सीमेटली, इट्स 35.5, मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए 35 लेता हूँ, दिस बिकम्स 58। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl is equal to 58. This means 58 grams of NaCl is equal to 1 mole of NaCl. और मैं यहाँ भूल गया बताना कि मोल जो है ये बेस क्वांटिटी है। 7 जो बेस क्वांटिटीज है उनमें एक मोल है MOLE, और इसको लिखते हैं असाइनर में MOL मोल। ये भी आप इस साथ में याद रखिए। फंडामेंटल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी है और MOLE मोल, और MOL हम लिखते हैं जब हमें असाइनमेंट की सूरत में लिखना होता है। तो 50 grams of NaCl is equal to 1 mole of NaCl. Similarly, 18 grams of water is equal to 1 mole of water. तो ये है, अब हम ग्राम में कैसे लिखते हैं मोल को इन टर्म्स ऑफ नॉट ग्राम, मास में, मास की सूरत में हम मोल को कैसे लिखते हैं। सिमिलरली अब दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ, अब हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना होगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें मोल को लिखना होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू mass of substance divided by mass of a molecule, single molecule. Total mass या mass of sample divided by mass of molecule. तो अब हम कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सपोज आप H2O की एग्जांपल ले लें। H2O 1 mole of H2O contains how many number of molecules, ठीक है ना। हम देखेंगे कि एक मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैंने ये फॉर्मूला लिखी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
in 1 mole is equal to mass of the substance divided by mass of molecule, mass of one molecule. तो अगर मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ, मैं कह रहा हूं कि 1 मोल में हम 1 मोल ऑफ वाटर में देखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole of H2O is equal to mass of 1 mole of H2O divided by mass of 1 molecule of H2O. लेकिन यहां पे इंटू मल्टीपल करना है रिलेटिव मास, क्योंकि हमारे पास जो, मैं ये लिखूंगा पहले, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इज उसका 18 ग्राम है, जो हमने अभी कैलकुलेट से पहले किया, इनटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज 18 इनटू 18 टाइम्स ये होगा मास ऑफ हाइड्रोजन। रिलेटिव मास यहां लेना है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, यानी कि 18 mass of 1 molecule is 18. That means actually it is 18 times mass of hydrogen. So when you substitute the value, you get 18 grams divided by 18 into mass of hydrogen, 1.6 into 10 raised power minus 24 grams. When you cancel out this gram and gram cancel out, it will cancel out. When you calculate it on solving, it will come out to be equal to 6.02 into 10 raised to power 23 number of molecules in a 1 mole of H2O. तो यहाँ में पता चलता है कि in a 1 mole of H2O you have 6.023 into 10 raised to power 23 number of particles, or there are 6.02 into 10 to the power 23 particles per mole. अगर मैं सपोज यही एग्जांपल अब NaCl पे लेता हूँ, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole of NaCl, that comes out to be equal to mass of 1 mole of NaCl, that you पहले ही किया हुआ है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CL is 58 grams divided by mass of 1 mole of, that is 58 times into mass of hydrogen, mass of 1 hydrogen. So means यहाँ पे 58 times, because हम relative mass लेते हैं, 58 times into mass of this hydrogen atom. So that's equal to 58 divided by 58 into 1.6 into 10 to the power minus 24 grams. Here's also gram. Cancel. When you calculate it, you get 6.02 to 10 to the power 23. Hence, number of molecules in 1 mole of NaCl is equal to 6.63. Water may be in 1 mole of H2O 6.023 10 to the power 23 number of particles of molecules are there. So this number, this Anderson number is known as Avogadro's number. This is Avogadro's number. This is Avogadro's number. And experimentally ये बाद में देखा गया था कि there is a 6.023 to 10 to the power 23 number of molecules in an Avogadro's number. So ये जो तरीका था, it is the way to find out the number of particles when your mass is given, and the simplest formula for calculating the number of particles from the if you have a number of molecules given, you can calculate the number of moles is equal to N divided by Na. This is the simplest formula if you are supposed to calculate the number of moles. Simply number of molecules, molecular mass, number of molecules divided by Avogadro number, you will get the number of moles. This is you have not to get confused with N or N or Na. Na simply represents the Avogadro's number, and N number of molecules, and small n number of moles.
if you have n given, divide the average number, you get that number of moles. Given this, you can divide the average number, you get this. Moles into 6.023, you get the total number of molecules, and multiply n with Na. This is the simplest formula. You put down this, so in future you can calculate the number of molecules out of this very formula. So this was about the mole and Avogadro's number. Now, as such, our topic is regarding the kinetic theory of gases. So, as earlier I mentioned that we are just relating the thermodynamical macroscopic variables, these state variables, just relating with the microscopic, that is kinetic energy and speed. Now, these three variables, these are called state variables, and they are enough to check out the state of any system. ये काफ़ी हमारे लिए है कि हम किसी भी स्टेट, किसी भी सिस्टम के स्टेट को स्टडी कर सकते हैं. There is a mapping between PV and T between kinetic energy and this, यानी कि हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम लिंक करते हैं विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ. ये सारा जो खेल है पीवीटी का, ये मोशन ऑफ पार्टिकल का रिजल्ट है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स करेंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इन्हीं का नतीजा है. पीवी एंड टी, ये तीनों जो जब मॉलिक्यूलर मोशन, रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन का ये नतीजा है, और उसी वक्त से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करके यहाँ पे जा सकते हैं इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं स्पीड पे. जो वॉल्यूम है वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वॉल्यूम इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रीडम द एटम्स हैव to spread throughout the container. जो V है, जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है और उस वजह से जो स्प्रेड करते हैं कंटेनर के अंदर, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सटेंड हो जाता है. यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का जो है वो फ्रीडम ऑफ एटम्स की वजह से है. और प्रेशर क्या है, यही एटम्स जब कंटेनर के अंदर वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हमारे पास प्रेशर आ जाता है. और यही मॉलिक्यूल्स जब अपनी काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करते हैं, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उस वजह से इनका टेम्परेचर पे भी असर आ जाता है. तो ये जो पीवीटी है, it is actually the result of the motion of the particles. That is why we are talking in the kinetic theory of gases. All the particles are randomly moving, and we are studying these three things. That means the random motion is quantitatively discussed with respect to this P, V, and T. P is the pressure due to the random motion of molecules on the walls of container. V is the volume due to the result of the atoms. They are spreading away, they are moving and extending the volume, and T is the temperature because they are gaining the momentum, or they are gaining the speed, they are gaining the kinetic energy, they are enhancing their internal energy, hence temperature increasing. So because we also know that temperature is the function of kinetic energy, so these PVT and kinetic energy and speed, and we are calculating from this PVT these two things. Now, how these two things are related, we will discuss further. We know we have a gas equation, PV is equal to nRT. As you know, as at low densities, the real gas behaves as ideal gas, and you have an equation PV is equal to nRT. Let me discuss actually
Why? Because PV is equal to nRT. What actually it means? We are supposed to calculate the energy, and here in thermodynamics, we can't write the energy in terms of work done as a force to distance. When we dimensionally check it, when you check a dimension in P is a force per unit area, A is volume A into H. If suppose a container of area A and H, you have PV given. When you check a dimension, you get force in the height of force in the distance. If you write mg, you get mg potential energy. You get the dimensions of energy simply. So force in distance also. That means this left hand side equation actually represents the energy, actually represents the work done. And n is constant, number of moles, r is constant, and it is T which is variable again. That means the work done is actually depending upon the temperature. In thermodynamics, the work done is actually calculated with respect to temperature, and temperature is itself function of kinetic energy of the molecules, and speed of molecules, and velocity of molecules. So that the link, the kinetic theory of gases its link starts from the motion of molecules having a velocity v. This velocity gives a kinetic energy, and kinetic energy enhances temperature, and by virtue of temperature, the energy is increased or energy is decreased depending upon the value of T. So PV is actually a work done, and PV is actually the way to calculate the energy in case of thermodynamics. So PV is called nRT, is an ideal gas equation, and I discussed that low densities, the real gas behaves as an ideal gas. So let me now go one by one. The PV is called nRT has three variables, that's PV and T. We have to keep to one constant. That's another topic. If we keep T constant, that means isothermal. If we keep V constant, that means isochoric. If we keep P constant, that means isobaric. These are the different things, different way of finding the work done for different processes. But before going to that next topic, we'll be discussing here some important factors, that's R. And this is the ideal gas equation, ideal gas equation in terms of number of moles. So how we write same ideal gas equation in terms of number of molecules? That's N. N we introduced that. Now we'll be discussing first. We'll discuss about the mole. Then we go all along the mole in terms of mass and mole in terms of number of molecules. Then we go from macroscopic to microscopic properties, macroscopic properties like PV and T, how they are related to in these microscopic properties, and then how the size of the system is calculated into the moles. And then we put down this PV is equal to nRT, and we study that PV is actually a work done, and how to calculate the work done, because work is a function of temperature actually, and temperature itself the function of kinetic energy of the molecules. So जितनी kinetic energy बढ़ेगी उतना temperature बढ़ेगा. जितनी kinetic energy बढ़ी means internal energy बढ़ रहा है. So internal energy and kinetic energy are the same two things, and internal energy and kinetic energy is also the function of temperature. So temperature is depending upon the internal energy or kinetic energy, and temperature then decides how much value of P and V could have. So PV is equal to nRT is now an equation. Let me discuss first R. Then this is the equation PV is equal to nRT in terms of ideal gas equation, in terms of number of moles. Then we put down the same equation in terms of number of molecules. So if I suppose put down for a 1 mole, for n is equal to 1 mole, then PV comes out to be equal to RT, and your R is equal to PV by T. For 1 mole, for perfect gas, if you write for perfect gas, R is equal to, at normal temperature, give the value STP, is P is equal to 273 Kelvin. And V is, for 1 mole, V is equal to 22.8
4 liter. At T is absolute temperature 273 Kelvin. So you can write 273 into 2.24 into 10 to the power minus 3 cubic meter divided by 273 temperature 273 P is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Newton meter square. Sorry, it is 1.01 into 10 to the power 5 Newton meter square. On calculating this, you get the value of R that comes out to be equal to 8.31 joule K inverse mole inverse. So you get the value of joule, K inverse and mole inverse. This is the value of R. For a 1 mole, your R is equal to 8.31. So similarly, now again I know we have another formula. Just earlier I put down the formula that N is equal to. Now let me discuss Helmholtz, this Boltzmann's constant. Another thing, Boltzmann's constant. What is Boltzmann's constant? Boltzmann's constant is actually Kb is the ratio of gas constant to Avogadro's number. So when you put down the value of R, that's 8.31 joule K inverse mole inverse divided by Na 6.02 10 power 23 mole inverse. On calculating, you get 1.38 into 10 raised to power 23. On this substitution, when you substitute values, you get 1.38 joule K inverse. This is Kb, Boltzmann's value. Remember it also, it's very important. Can be asked in an objective, and what is the value of Boltzmann's constant, what's the value of gas constant. Dividing this real gas, this universal gas constant with the Avogadro's number, you get the Boltzmann's number. So this is the equation that we have for ideal gas in terms of number of moles. Now let me put down the same equation. PV is equal to nRT. So PV is equal to N. We know N is equal to N divided by Na, as I have told you earlier. N divided by Na into R can be written as Kb into N is equal to R. So I write Kb and E into T. So Na gets cancelled. So PV is equal to NKBT. And you can write PV is equal to KBT. This is NKT. This is actually the equation. PV is equal to NKT is the formula of work done in terms of number of molecules, and PV is equal to nRT is the formula for the same work done for the same ideal gas equation in terms of number of moles. When you have number of moles given, you get PV is equal to nRT. When you have number of molecules given, PV is equal to NKT. Similarly, then N can be discussed, and this work done can be written as in terms of kinetic energy in a classical way. How kinetic energy is written? Because you don't have a here way to find out the mass and velocity individually, then you calculate 1 by 2 mv square for each molecule. So you have to find out the temperature, you have to find out the kinetic energy in the form of temperature. So knowing the temperature, Boltzmann's constant, and the number of molecules, you get the work done. This is how you calculate the kinetic energy, or because kinetic theory of gases contains only a kinetic energy, this is how you calculate the kinetic energy in case of thermodynamics, the way you did it in mechanics as 1 by 2 mv square. Similarly, in oscillations, you have another formula for kinetic energy depending upon the variables associated with that domain. So similarly, here different domains contain different way out to put down their own formulas related to the parameters of the concerned topic. So PV is equal to nRT is equal to NKB, PV is equal to NKT, and PV is equal to nRT are the two same ideal gas equations.
which represents any state of stress system, and this in terms of number of molecules, and this in terms of number of moles. And this ideal gas equation is really ideal because it gives a macroscopic state variables to find out the any state and the parameters associated with that state of system. Thank you very much. The next topic will be soon.